Okay, good evening, everybody. See, in forms of market, we have studied four basic types of market: perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. तो ये चार हमने स्टडी किया था, am I right? Perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. Let us highlight sellers. In perfect competition, large number of sellers, monopoly, single seller, monopolistic competition, large, or you can say many, and oligopoly, few sellers. ये उनका एक बाइफर्केशन हमने स्टडी किया था सेलर्स के बारे में. बायर्स बताओ, परफेक्ट कंपटीशन. Buyers, perfect competition, large number of buyers. Monopoly, large number of buyers. Monopolistic competition, large number of buyers. Oligopoly, large number of buyers. Product, perfect competition, homogeneous product. Monopoly, unique product. The monopoly product is a unique product in which the product is available only with the monopolist. Monopolistic competition, differentiated product. Oligopoly, differentiated product. Entry, free, entry, restricted, entry, free. फ्री भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है. अगर सेलर ओलिगोपोली मार्केट में सेलर्स ग्रुप बना के रेस्ट्रिक्ट कर दे तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी हो सकता है. सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, राइट. तो ये सब कुछ फीचर्स हमने उसमें डिस्क्राइब किए थे. नाउ हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था कॉल्ड एज equilibrium price. What I said about equilibrium price, I said equilibrium price is a price at which demand for and supply of a product is equal. The price at which demand for and supply of product is equal.
is called equilibrium price. जैसे tabular way पे अगर मैं बताऊं, price, demand, supply, remark. Price 1, 2, 3, 4, 5. Now price is rising, तो हमको पता है डिमांड कम होने वाला है. 10, 8, 6, 4, 2. एंड प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा. 2, 4, 6, 8, 10. अभी प्राइस व्हेन प्राइस वाज 1 and 2, यहाँ पे आप ये देखो, आई एम मेकिंग अप अ कर्ली ब्रैकेट. आई एम मेकिंग दैट कर्ली ब्रैकेट इन रेड कलर. Price 1 and 2. Can I observe what remark we can observe over there? When the price was 1 and 2, demand was 10, supply was 2, demand was 8, supply was 4. That means over here we observed, observation, demand is greater than supply. Now I put up green brackets. Price 4 and 5. Demand was 4, supply was 8, demand was 2, supply was 10. Demand less than supply. Demand less than supply. And ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. Now what does economics say? That when the demand is greater than supply, such situation in economics is called scarcity. Demand ज्यादा है, supply कम है. It is called scarcity. When we observe the green curly bracket, we observe demand is less than supply. Demand कम है, supply ज्यादा है. Such situation in economics is called surplus or excess. And when demand is equal to supply, that is called equilibrium. So I can say equilibrium is considered as one of the most ideal concepts existing in economics. Now, उसी पार्ट को जब हम ग्राफिकली बताएंगे. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. We observed that this is demand curve DD and
S is the supply curve. They are equal at point E. So OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया. नाउ आज के लेक्चर में मैं एक इम्पैक्ट आपको बताने वाला हूं कि भाई देयर कैन बी चेंजेस इन डिमांड, राइट? There can be two type of changes in demand. Can you tell me what type of changes in demand can take place? Increase or decrease? Very good, very good. There can be increase or decrease in demand. तो अभी सिचुएशन ऐसे होता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी and original quantity is OQ. Abhi suppose supply remaining the same, if the demand increases, we can see that the price will rise. Supply remaining the same, if the demand decreases, we can see the price will fall. Are you understanding this logic? Supply remains the same, agar demand increase ho gaya, price will rise, and agar supply remaining the same, demand kam ho gaya, price will fall. Is that logic clear to all of you? Similarly, अगर ये अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है, D is the demand curve, S is the supply curve. Equilibrium is over here. OP is the price, OQ is the quantity. अगर demand remains the same, if the supply increases to S1, we get a new price at P1. मतलब अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर सप्लाई कम हो जाएगा S2, we get a new price at P2. प्राइस भी बढ़ जाएगा. Is the impact of change in demand and change in supply clear to you? आप लोगों को समझाइए. Have you understood that concept? How changes in demand or changes in supply will impact the equilibrium price? आज हम वही एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे. मैं एक डायग्राम बना के आपके साथ में 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा and then we will wind up because I'll have to go through the module. मेरे पास 2 दिन पहले ही लेटेस्ट वाला एक मॉड्यूल हाथ में आया है. So I'll just go through that again once कि 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड और क्या क्या पढ़ाया जा सकता है आपको उसके अंदर. Just
मल्टीपल डायग्राम थे। देखो उसमें okay, now I'm drawing up one diagram. Plastic का scale बोलते DD is the demand curve. अभी वो दो लोग कौन आए थे? उधर नीचे थोड़ी देर पहले इसका क्या काम था? इसको SS is the supply curve. Original equilibrium point is at point 1. अभी D1 is increase in demand, D2 is decrease in demand. Supply analysis के साथ मिलेगा। S1 is increase in demand. Sorry, increase in supply. S2 is decrease in supply. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी यहाँ पे मैंने 9 अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट point 1. Original equilibrium is at point 1. तभी मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा, आप मुझको बताओगे कि ये सिचुएशन अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो व्हाट वुड बी द चेंज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इनमें से कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, हम वो डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन 1, रिमेंबर आई एम गोइंग टू आस्क यू 7 डिफरेंट क्वेश्चंस। उसके हिसाब से
we'll discuss that, and then after discussing those 7 questions, अगर आप 7 minutes में complete करोगे, I'll wind up in 7 minutes. Income of a person rises and the price of factor of production also rises. अभी कोई एक प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 पे था. अभी मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई इसमें अगर इनकम ऑफ अ पर्सन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली फैक्टर का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा. तो अभी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर रहेगा और क्यों? अभी देखो, सिंपल लॉजिक, आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया है, बताओ मुझको. व्हाट हैज हैपेंड टू इंक्रीज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो गया है. कंज्यूमर का इनकम राइज हो गया, मतलब डिमांड क्या होगा? डिमांड एंड इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड. डिमांड बढ़ेगा, सो डिमांड विल इंक्रीज. इट इज अदर फैक्टर, राइज नहीं, आप इंक्रीज बोलोगे. ओके, तो डिमांड को विल बिकम डी से डिमांड को किधर चला जाएगा? डी से डिमांड को किधर चला जाएगा? D1 पे, राइट. नाउ व्हाट इज सेड फर्दर? फर्दर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना. देखो, फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो राइजेस. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी बढ़ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई विल डिक्रीज, तो सप्लाई को विल शिफ्ट टू S2. तो नया इंटरैक्शन डिमांड का D1 है एंड सप्लाई का S2 है, तो देयर इंटरैक्शन इज एट पॉइंट 4. So the new equilibrium will be at point 4. New equilibrium will be at point 4. Any doubt into that? समझा आप सबको ये? अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.